Hello students, welcome back to the Botaniverse. In previous video, we discussed about cell and cell theory. Today, we are going to discuss about characteristic of prokaryotic and eukaryotic cell and their difference. So let's start. Cells can be grouped into two types basing on the presence or absence of an organized nucleus, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. आमर जो दीटा टाइप रो सेल अच्छी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल रे ट्रू न्यूक्लियस नाही बट यूकैरियोटिक सेल रे ट्रू न्यूक्लियस अच्छी ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर नोन एज प्रोकैरियोट्स माने जो ऑर्गेनिजम मानकर प्रोकैरियोटिक सेल थाए आमे से मानको प्रोकैरियोट्स कहि थाउ whereas those containing eukaryotic cell are called eukaryotes और जो organism मानकर eukaryotic cell थाए हमें से मानको eukaryotes कोई थाओ. Okay, now let's go to the prokaryotes. Prokaryotes are relatively single small cells and simple structure surrounded by plasma membrane and with a characteristic cell wall that may differ in composition depending upon the particular organism. माने जो प्रोकैरियोटिक्स मानकर सेल थाए सेटा सिंगल थाए साइज रे स्मॉल थाए बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर थाए ओनली सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, से मानकर सेल वॉल भी थाए एंड जो सेल वॉल थाए सेटा ऑर्गेनिज्म वाइज डिफर करे. ओके, तार कंपोजिशन टा लाइक गोटे ऑर्गेनिज्म रे गोटे टाइप रो सेल कंपोजिशन आ गोटे ऑर्गेनिज्म रे आ गोटे टाइप रो सेल कंपोजिशन थाए. Okay, bacteria and archaea are the two domain of prokaryotes. आमे जो prokaryotes विषय रे पढुचे एटा को मानकर थाए बैक्टीरिया आ आर्की एमानको प्रोकैरियोट्स कहा जाए काहेकि ना एमानकर प्रोकैरियोटिक सेल थाए. ओके, प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स whose cell lack a nucleus and other organelles. आमे जानिले कि प्रोकैरियोट्स मानकर न्यूक्लियस न थाए कि अदर ऑर्गेनेल्स भी न थाए. Now let's go to the eukaryotes. Eukaryotic cells are also surrounded by the plasma membrane and in plants by cell wall. Means eukaryotic cell manakara plasma membrane thae and in plants by cell wall. एमती नहीं कि प्लांट मानकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थाए प्लांट मानकर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थाए प्लांट मानकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किए सराउंड करिकी रखी थाए ना सेल वॉल सराउंड करिकी रखी थाए. Eukaryotes are organisms whose cells are possess a nucleus. हमें जानिले eukaryotes मानकर कौन था nucleus था and other membrane bound organelles such as mitochondria, chloroplast, lysosome, rough and smooth ER means endoplasmic reticulum, vacuoles etc. तो ए सब membrane bound organelles भी हमको eukaryotic भितरे मिली जीवो माने कौन यूकैरियोटिक भितर थाए. ये जो क्लोरोप्लास्ट आमर ओनली प्लांट मानक भितर थाए आमर ह्यूमन की एनिमल्स ए सब भितर क्लोरोप्लास्ट न थाए. ओके, नाउ लेट्स गो टू द डायग्राम ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके, दिस इज द कैप्सूल, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो तो ये सेल को तीनटा जिनस सराउंड करिकी अछि सेल वॉल कैप्सूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तापर ता भितर कोन अछि साइटोप्लाज्म आ ए साइटोप्लाज्म भितरे हमर राइबोसोम अछंती डीएनए गुडी को कॉइल हेकी अछंती. ओके, दीज आर द डीएनए व्हिच आर कॉइल्ड एंड इट गोटे मेसोसोम प्रेजेंट अछि. दिस इज अ बैक्टीरिया फ्लैजेलम माने एटा जेहेतु गोटे बैक्टीरिया रो सेल डायग्राम आम ये बैक्टीरिया फ्लैजेलम को देखैचे. ठीक अच्छे, नाउ गो टू द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल भितर आमर कौन सब अच्छी बहुत किछि जिनस अच्छी आउ न्यूक्लियस टा सबुठ बेसी इंपोर्टेंट. ओके, दिस इज द न्यूक्लियस. इन द सेंटर ऑफ दिस न्यूक्लियस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस. ठीक अच्छे, आ न्यूक्लियोलस को किए सराउंड करके अच्छी क्रोमाटिन भितर कौन अच्छे डीएनए. ओके, आ देखंतु ए न्यूक्लियस चारिपटे हमर कौन अच्छी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ए रफ आ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने कौन रफ माने
ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपरे राइबोसोम माने लागिकी अछंती सेथिबा याकू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुआ होउची आ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कोनोसी भी राइबोसोम लागिकी नाहांती then these are the intermediate filament this is the ribosome this is the mitochondria then there is the plasma membrane which surround this eukaryotic cell these are microtubule microfilament centrosome lysosome vacuole everything is present there is also a secretory vesicle present okay how ए सबु गोटे fluid type रो जिंस रे अच्छी आउ सेटा को कौन कुआ हुए साइटोप्लाज्म ओके हमरो प्रोकैरियोटिक रे भी साइटोप्लाज्म अछि यूकैरियोटिक रे भी साइटोप्लाज्म अछि ठीक अछि so this is the diagram of both prokaryotic and eukaryotic cell now let's go to the difference between prokaryotic and eukaryotic cell okay these are the difference सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन केमती थाए प्रोकैरियोटिक मानकर ना से माने यूनिसेलुलर बट रेयरली मल्टीसेलुलर माने बेले बेले से माने मल्टीसेलुलर बहुत एक्सेप्शन आउ यूकैरियोटिक सेल माने ऑलवेज मल्टीसेलुलर एंड बेले बेले यूनिसेलुलर दिस इज आल्सो एक्सेप्शन ओके यांकर सेल साइज केमती 1 to 10 मिलीमीटर कहार प्रोकैरियोटिक रो यूकैरियोटिक रो केमती 10 to 100 मिलीमीटर देन प्रोटोप्लाज्म हाउ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल relatively rigid and non vacuolated gel माने तांकर जेल टा बेसी vacuolated नुह then resistant to desiccation osmotic shock and thermal denaturation okay and eukaryotic cell typically more fluid माने बहुत fluid type रो जिंस काने बहुत सारा जिंस अछि हम सेल भितरे then sensitive to desiccation okay osmosis shock and thermal denaturation माने हमरो desiccation हुए थर्मल डिनेचुरेशन ऑस्मोसिस शॉक ये सब हुए हम यूकैरियोटिक सेल भितर बट प्रोकैरियोटिक सेल भितर सेमती किछि भी नाही देन सेल वॉल प्रेजेंट इन मोस्ट सेल प्रोकैरियोटिक सेल रे सेल वॉल प्रेजेंट थाए विथ म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा जो माइकोप्लाज्मा भितर सेल वॉल न थाए बट इन यूकैरियोटिक सेल the cell wall is present but only in plant cell not in human or plant not in human or animal cell okay nucleus जानले हमर ट्रू न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोटिक भितर न थाए बट यूकैरियोटिक भितर कोन थाए ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थाए न्यूक्लियोलस थाए न्यूक्लियोप्लाज्म थाए सब किछि थाए यूकैरियोटिक सेल भितर बट हमर प्रोकैरियोटिक सेल भितर सेमति किछि भी न थाए न्यूक्लियस ही प्रेजेंट न थाए ओके देन क्रोमोसोम जेहेतु न्यूक्लियस नाही तो क्रोमोसोम कोठु आसीबो सेति में प्रोकैरियोटिक सेल भितर क्रोमोसोम भी न थाए ओनली सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट थाए डीएनए नथिले तो हबनी किछि सेति में किंतु विदाउट हिस्टोन प्रोटीन सेतरे हिस्टोन प्रोटीन न थाए बट इन यूकैरियोटिक सेल ट्रू क्रोमोसोम थाए विथ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन ओके जीन्स एतरे जीन थाए और जीन्स आर नॉट इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स बट इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स द्वारा हुएनी नॉन कोडिंग सीक्वेंस कारण एथरे कोनोसी भी कोड हुएनी बट इन यूकैरियोटिक सेल जीन्स आर फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स thus the gene is split that is association with both exons एथरे इंट्रॉन्स एक्सॉन्स बोथ थांती आ एथरे कोडिंग सीक्वेंस हुए आम भितर कोडिंग हुए ठीक अछि माने हमर सेल भितर देन ऑर्गेनेल्स membrane bound organelles absent in prokaryotic cell in eukaryotic cell membrane bound organelles are present okay we discussed about it then the ribosome in prokaryotic cell the ribosome is comparatively smaller and this is the 70s type okay see 50s plus 30s subunits this is the 70s type ribosome but in eukaryotic cell the ribosome size is larger and is 80s type 60s plus 40s subunits okay now go to the mitotic apparatus in prokaryotic cell there is no mitotic apparatus but in eukaryotic cell this is present cell division mostly amitotic generally binary fission द्वारा ही हमरो cell reproduction बा cell division करंती but in eukaryotic cell by mitotic by meiosis reproductive cell टा meiosis द्वारा हुए आ सब किछि mitotic वाइज हुए
then cell cycle shorter 20 to 30 minute cell cycle थाए prokaryotic cell भितर आमर eukaryotic cell भितर 12 to 24 hours रा हुए in centrioles absent, in eukaryotic cell present, microtubules absent, in eukaryotic cell present, vacuoles absent, in eukaryotic cell present, flagella, simple structure composed of the protein flagellin, okay, but in eukaryotic cell it is complex structure, okay. Plasmids are present in prokaryotic cell but not in eukaryotic cell, okay. The sexual process, typical sexual process absent in prokaryotic cell, but in our eukaryotic cell there is the sexual process present. Endocytosis and exocytosis absent in prokaryotic cell but present in eukaryotic cell, okay. The example of prokaryotic cell, what? Mycoplasma, bacteria, cyanobacteria, kingdom of Monera. These are the example of prokaryotic cell. And the example of eukaryotic cell, plants, animals, protists, fungi, plantae, everything is goes under eukaryotic cell. So this is for today. We discuss everything. I hope you understand. Thanks for watching. Bye bye.